Hello everyone, today we will discuss about integration. So if you want to learn integration or know about integration, you must be know about derivative, differentiation. Because जदि गोटे पिला differentiation जानिछे, differentiation रो उल्टिया ही integration. Means the reverse process of differentiation is called as integration. So what is the meaning of integration? The reverse process of differentiation is called as integration. देखो डिफरेंशिएशन रो रिवर्स प्रोसेस को आम इंटीग्रेशन कहबा. सो देखो जदि डिफरेंशिएशन जदि रिप्रेजेंट होचे dy by dx, if differentiation represent by dy by dx, then integration represent by y dx. Means differentiation रे तुम देखुछ डिवीजन टाइप रो होचे, किंतु इंटीग्रेशन रे देखुछ तुम मल्टीप्लिकेशन टाइप रो होचे. सो डिफरेंशिएशन रो रिवर्स प्रोसेस होचे इंटीग्रेशन मन रखबो. सो इंटीग्रेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट हेबा इंटीग्रेशन it is represented by a symbol function of x fx dx or integration of y dx. That means देखो integration is represented by this symbol. This is integration of fx with respect to dx, or this is integration of y with respect to x. So तर माने function of जन x रोचे, that x is variable x. हेले ही हमें इंटीग्रेशन का डिराइव करी पारमा. अब fx फंक्शन ऑफ fx जगह पे हमें y लिखी भी पारमा. माने रखो. So this is the symbol of integration of fx dx or integration of y dx. क्लियरली बुझलो व्हाट डेरिवेटिव में तुम लिखुथिलो dy by dx. डिवीजन टाइप रोथिला किंतु इंटीग्रेशन में देखुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप रोचे y dx रोचे. सो differentiation or reverse process होची इंटीग्रेशन, and it is represented by this symbol. अब आके जेते बेले इंटीग्रेशन रो बहुत गुडा फार्मूला हमें डिराइव करी चलमा, सेते बेले तुम इजीली जानि पारबो जे जेन पिला डेरिवेटिव अपडेट हिचे तार उल्टिया फार्मूला इंटीग्रेशन रे यूज हबा. रिवर्स प्रोसेस से रीजन रो का जे हमें डिफरेंशिएशन रो रिवर्स प्रोसेस के हमें इंटीग्रेशन करू. तुम ये फार्मूला डिराइव करू छे देखो तमर आसबा सब. So first, if y is equal to x to the power n, then what will be the value of integration? You know that integration y dx, and in this case instead of y we put this value x to the power n. So x to the power n dx. So x to the power n dx, that implies तुम जानिछो पावर जदि रहले पावर माने सम हेबे x to the power n plus 1, but in case of integration पावर जते रहबा सेते तुम डिवाइडेड हेबा. दिस इज इंटीग्रेशन. बट एठी उडे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज हेबा. इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट काजे यूज होला मन रखिथिबो बाबू माने इंटीग्रेशन दुई प्रकार. वन इज इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, अनदर इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन. Indefinite integration is that type of integration which has no proper limit. देखो ई इंटीग्रेशन रो प्रॉपर लिमिट जदि हम x1 टू x2 धरमा तो लिमिट रहबा. तो जदि इंटीग्रेशन रो लिमिट रहबा तो सेते बेला हम ताके कहमा डेफिनाइट इंटीग्रेशन. और जदि इंटीग्रेशन रो लिमिट ही नहीं ना सेते बेला इंटीग्रेशन के हमें कहमा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. And in case of indefinite integration we always add a integrating constant c. मन रखो. देखो इधर एग्जांपल केतेटा दोचे. if y is equal to x to the power 2, then integration of y dx
इंटीग्रेशन ऑफ y जगह थी तुम्हारे लगभग x to the power q dx. That implies x to the power n जगह थी कितने अच्छे q अच्छे, so x to the power n plus 1 3 plus 1 by 3 plus 1. That implies x to the power 4 by 4. But this is a indefinite integration, so we add integrating constant c. Our example, if y is equal to x to the power 7, then integration of y with respect to x can be written as, in case of instead of y we use the value of x to the power n, y जाएगी x to the power x to the power 7 dx. That implies x to the power 7 plus 1 by 7 plus 1. And as this is also a indefinite integration, so in this case also we add integrating constant c. But in this formula we cannot use the value of n as minus 1. That means n is not equal to minus 1. n minus 1 ही नहीं हुए, because काज नहीं हुए. देखो जदि तुम y is equal to x to the power n जगह जदि हम minus 1 पुट करना, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y जगह थी लगभग x to the power minus 1, then integration minus 1 plus 1 by minus 1 plus 1. That means this value is going to be infinity. But integration का value केवल भी infinity नहीं हुई, small value से represent करसी, से reason रखा जे कि value जे integration रो infinity होची, means एठी तमर minus 1 x to the power minus 1 हेबा द्वारा ही होची. सेतिपाई n रो value केवल भी minus 1 नहीं हो, माने रखिबो. Hello, so लिखि दबो, in this formula n is not equal to minus 1. Then और एक formula लिखना हमें, बुझाबल करी बहुत सहज आए. हमें देखबो डेरिवेटिव रो उल्टिया ही इंटीग्रेशन आसबा. देखबो फॉर्मूला में आसले ऑलरेडी तुम जानी जीव, किंतु धैर्य सहित क्लास करो. If y is equal to 3x to the power 5, then what will be its integration? Y dx, and instead of y we use the value 3x to the power 5 dx. So you know that this is a constant and this constant is out from this integration box. So constant जब देखिबा એટલે always constant integration ରୁ बाहरी गला तो रहना केते x to the power 5 dx. आइता फार्मूला तो तुम जाइन छो 3 x to the power n plus 1 5 plus 1 by 5 plus 1. सरला that means x to the power 6 by 6. Then 6 और 3 के तुम कते पारबो. That means our reason is as this is a indefinite integration, so we add integrating constant c. मन रखिबो indefinite integration ने फार्मूला हिसाब रे तुमे आंसर डायरेक्ट कला करे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड करबो. सब बेला मन रखिबो indefinite integration means फार्मूला पाइला पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c ऐड होबो. और indefinite integration केते बेला पा जाउ छे जेते बेला देयर इज नो प्रॉपर लिमिट इन इंटीग्रेशन. That implies this value will be 3x to the power 6 by 6. 2 cancel. That implies this is x to the power 6 by 2. Wonderful. Next हमें देखना हो कितना formula. If y is equal to 1 by x, then what will be its integration? Y dx. That implies instead of y we put this value 1 by x
dx is dx. So integration of 1 by x is log e x, log e x. Now as this is also indefinite integration, so we add integrating constant. So तमे डेरिवेटिव ना पढिथिलो, डेरिवेटिव ना पढिथिलो तमे d by dx of log x is equal to 1 by x. इंटीग्रेशन में कर उल्टिया जे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x is equal to log x. किंतु डेरिवेटिव में डेरिवेटिव ऑफ log x is equal to 1 by x. किंतु इंटीग्रेशन रे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x is equal to log x. सो डेरिवेटिव में उल्टिया वाला देखो एबे नेक्स्ट देखो माने if y is equal to x to the power 0, then integration can be written as y dx, that implies x to the power 0 dx. That means e terms के हमें e टाइप में रिप्रेजेंट कर पाना only dx, because x to the power 0 is 1, so this can be represented only integration of dx, and only integration of dx is always x. Similarly, only integration of dz is only z. But in this case also we add the integrating constant, because it is also indefinite integration, so we can also add integrating constant. Next, how we think देखो, if y is represented with a various function fx1, fx2 plus fx3 plus fx n, then what will be its integration? dy dx, that implies integration of y. Instead of y, we use this value fx1 plus fx2 plus fx3 plus plus fx n. y जाती है then dx is dx. And in this case, integrating is divided into various parts with respect to fx. So हमें सिंपल मैथमेटिक्स का करना fx1 into dx, fx1 dx plus fx2 into dx, fx2 dx plus fx3 into dx, fx3 dx plus plus fxn into dx, fxn dx. बट जेतेरा फंक्शन सहित dx मल्टीप्लाई होला सेटा फंक्शन में भी इंटीग्रेशन का यूज होला माने रखिबो, बिकॉज़ सब फंक्शन का जे गुटे इंटीग्रेशन आसबा, बिकॉज़ इंटीग्रेशन भी कॉमन जाय छे सब फंक्शन का जे. So this is the formula, and as for this formula I give an example so that you clear 100% clear. बुझाओ भल करी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इंटीग्रेशन तुम सेकेंड ईयर बहुत पढ़ब, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत बड़ बड़ चैप्टर माने, किंतु तुम इन फिजिक्स ने जिते दरकार से ही आम यूज करूँ पढ़ाई. So if y is equal to 3x cube plus I raised to the power 4 plus 2x cube, then find out its integration. Integration of y dx, integration of y, and instead of y we can put this value 3x cube plus I raised to the power 4 plus 2x square y, then dx. Now, just follow the line. This is
3 फंक्शन 1 2 एंड 3 फंक्शन y रो वैल्यू 3 टा फंक्शन ने डिवाइड इचे तार माने हमें सिंपल मैथमेटिक्स टा सॉल्व करना 3x³ into dx 5x to the power 4 into dx 2x square into dx करना किंतु 3 टा फंक्शन में जेहेतु ये डिवाइड इचे y टा y जाती लिखितो 3x³ 5x to the power 4 2x square तो y जेहेतु 3 टा फंक्शन में डिवाइड इचे इंटीग्रेशन भी डिवाइड वाला टाइम रे 3 टा फंक्शन में यूज होगा त मैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ dx मझिरे प्लस আছে प्लस देन इंटीग्रेशन ऑफ 5x to the power 4 dx एडी भी मझिरे प्लस আছে प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x square dx एडी में मझिरे प्लस আছে प्लस अब सॉल्व करो यू नो दैट inside of integration if there is constant then the constant always be outside so we also drift this constant from outside to the outside so 3 integration x³ dx plus here also constant integration to vary to 5 by x to the power 4 dx plus it will be 2 আছে 2 vary jiba by x square dx x square dx then we know that this integration we know that this formula of this integration n plus 1 by n plus 1 and 3 into x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1 plus 5 into x to the power 4 plus 1 by 4 plus 1 plus 2 into x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 देखो जी फार्मूला इंटीग्रेशन का फार्मूला तुम जानि छो इंटीग्रेशन का फार्मूला ऑलरेडी तुम जानि छो 2 कांस्टेंट वैल्यू वाला सेटा इंटीग्रेशन से और x to the dx तब देखो तुम x लेके पारबो x to the power 4 by 4 x to the power 5 by 5 लगो 5 5 कैंसिल होगा सॉल्व करो तापर x to the power q by q करे 2 लगो लीजिए नेक्स्ट हमें हां अगले जिनिसटा जे सब लेखला परे these are indefinite integration so we add integrating constant c ई टाइप रो तुम निजे केतला प्रैक्टिस करबो ई जीवा देन हमें देखना if y is equal to e to the power x dx then what will be its integration y dx that means e to the power x dx and integration of e to the power x dx is only e to the power x in case of derivative or differentiation derivative of e to the power x is equal to e to the power x here also integration of e to the power x is equal to e to the power x so derivative of integration में e to the power x रो वैल्यू चेंज नहीं होगा मन रखो e to the power x रो डेरिवेटिव भी e to the power x e to the power x रो इंटीग्रेशन भी e to the power x but in this case this integration is one type of indefinite integration because this has no proper limit so we know that in case of indefinite integration we add a integrating constant c सरल देन आउले फार्मूला देखो आउले फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला if y is equal to sin x then integration of y dx and instead of y we use this value sin x as sequence में लेते हैं देखो you know that y dx that implies in case of instead of y we put this value sin x dx so तुम डेरिवेटिव में पढ़ी छ डिफरेंशिएशन में पढ़ी छ जे sin x रो डिफरेंशिएशन होचे cos x किंतु sin x रो इंटीग्रेशन होचे -cos x
मन रखिथिबो सो इटा का हमें कहूछु डिफरेंशिएशन रो रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन रो रिवर्स प्रोसेस का जी कहला बिकॉज़ sin x रो इंटीग्रेशन sin x रो डिफरेंशिएशन होचे cos x किंतु sin x रो इंटीग्रेशन होचे माइनस cos x तो भल करी फार्मूला अपडेट हिथिबो बिकॉज़ फार्मूला रा समान किंतु प्लस माइनस डिफरेंस जे डेरिवेटिव केस में sin x रो डेरिवेटिव होचे ओनली cos x किंतु इंटीग्रेशन केस रे sin x रो इंटीग्रेशन होचे माइनस cos x सो इटा का हम कहू रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन मन रखो सिमिलरली इफ y is equal to cos x if y is equal to cos x then instead of y dx then instead of y you put this value of cos x dx तो मन पका जे डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होथिला माइनस sin x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होथिला माइनस sin x किंतु इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ cos x होचे खाली sin x मन रखिबो भल करी बुझा जे डिफरेंशिएशन जदी जेन पिला अपडेट ही चबले से इंटीग्रेशन जाला से समान डिफरेंशिएशन में तमरा cos x रो डिफरेंशिएशन रहथिला माइनस sin x किंतु इंटीग्रेशन केस में cos x रो इंटीग्रेशन ओनली sin x जेतु डिफरेंशिएशन में माइनस रहथिला तो इंटीग्रेशन में प्लस sin x and as all of these integration are indefinite integration so we add integrating constant c next if y is equal to sec square dx then what will be the value of integration y dx instead of y we written this value sec square dx that means sec square dx ro integration hoche tan x and this also indefinite integration so we add integrating constant so तमे पढिथिबो माने डेरिवेटिव ने देखबो डिफरेंशिएट ऑफ tan x रो डिफरेंशिएट होथिला sec square x और इंटीग्रेशन में sec square x रो डिफरेंशिएशन sec square x रो डिफरेंशिएशन होचे tan x सो बहुत बोले सिंपल देखो भल कर बुझ जे तुम डेरिवेटिव ने पढ़ी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ने पढ़ी तुम log x रो डिफरेंशिएशन होचे 1/x इंटीग्रेशन में 1/x रो इंटीग्रेशन होचे log x सिमिलरली डेरिवेटिव ने तुम पढ़ी tan x रो डिफरेंशिएशन होचे sec square x इंटीग्रेशन में sec square x रो इंटीग्रेशन होचे tan x तो मन रखिथिबो इटा माने परस्पर रिलेटेड होची रिलेटेड के हिसाब से एबे जस्ट कहली मुई जे डेरिवेटिव केस ने जदी डिफरेंशिएशन ऑफ log x जदी 1/x होची ले इंटीग्रेशन केस ने से 1/x रो इंटीग्रेशन log x हबा डेरिवेटिव केस में तुम tan x रो डेरिवेटिव जदी तुम sec square x हबा ले इंटीग्रेशन केस ने उल्टी आ जिबा इंटीग्रेशन केस ने sec square x रो इंटीग्रेशन हबा tan x so this is the reverse process of integration reverse process of derivative is called integration derivative रा पूरा उल्टिया होचे देखो तो डेरिवेटिव में तमर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x रो डेरिवेटिव तमर cos x थिला किंतु इंटीग्रेशन में माइनस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ cos x रो डेरिवेटिव तमर थिला माइनस sin x किंतु इंटीग्रेशन केस में प्लस sin x एटा होचे कॉमन एबे हम देखमा फाइनाइट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाला जेन की प्रॉपर लिमिट नहीं ना से रीजन पे जे मैं आंसर बाहर वाला पर सब जगह में c कांस्टेंट ऐड करलु बिकॉज़ प्रॉपर लिमिट न थिले इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करा जायसी किंतु जदी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के हमें देखमा इफ द इंटीग्रेशन हैविंग सम प्रॉपर लिमिट देन व्हाट विल बी दिस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन देखमा देखो if y is equal to
x to the power 4 and it has limit from 2 to 6. Then what will be the value of integration? We know that integration can be represented by y dx, integration of y dx. But in this case, limit can be put, limit is from 2 to 6. That means lower limit is 2 and higher limit is 6. Then integration of 2 to 6, and instead of y, we use this value x to the power 4 dx. So x to the power 4 dx ର integration ହେବା 4 plus 1 by 4 plus 1. तापर जब इंटीग्रेशन कटला परे देखो तमे काना करजिलो इंटीग्रेशन कटला परे तमे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के ऐड करथिलो बट सेटा तमे केते बेले ऐड करथिलो बिकॉज़ दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बट इन तमे सी ऐड करवा जरूरी नहीं ना बिकॉज़ इट इज ए डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सी ऐड नहीं करबो जेतु लिमिट अच्छे बेले इंटीग्रेशन कटला परे लिमिट ता स्क्वायर ब्रैकेट की करी आके पलेबो 2 और 6 अभी लोअर लिमिट और हायर लिमिट का जगह पे यूज होगा x जगह पे यूज होगा x रो रेस्पेक्ट में जेबी डाइस से x जगह पे यूज होगा दैट मींस फर्स्ट हायर लिमिट यूज होगा x जगह पे तो x जगह पे यदि हायर लिमिट पुट होगा 6 to the power 4 plus 1 is 5 then x जगह पे लोअर लिमिट 2 यूज होगा और 2 to the power x जगह पे यदि 2 यूज होगा पहले 2 to the power 6 by 6 then higher limit और lower limit यूज होला परे माइनस होगा दिस इज द आंसर तो आंसर तुम निजे बाहर करबो जा भी रिजल्ट बाहरबा आ गुटे एग्जांपल दउ छै क्लियर हिजबो आ गुटे एग्जांपल देखो if y is equal to 3x to the power 7 and limit is from u to v limit from के दीजिए u to v दीजिए अननोन लिमिट दीजिए भी नो प्रॉब्लम सो इंटीग्रेशन करो y dx लिमिट दीजिए from के u to v दीजिए लिमिट that implies integration limit from u to v then instead of y we use this value 3x to the power 7 then dx is and one of that if there is a constant inside the integration then that constant always be outside bahar kar delo then rahela u to v integration x to the power 7 dx x to the power 7 dx that implies 3 x to the power 7 dx रो इंटीग्रेशन तुम जानि छो x to the power 7 plus 1 then इंटीग्रेशन करला परे तुम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज करूथिलो बट इन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज नहीं है बिकॉज़ दिस इज ए डेफिनाइट इंटीग्रेशन and what is definite integration the integration which has proper limit so जेहेतु proper limit अच्छे definite integration से रीजन का जब c यूज नहीं c केते बेले यूज होगा जेते बेले लिमिट नहीं थिबा मींस से इंटीग्रेशन जब indefinite इंटीग्रेशन सेते बेले हमें c यूज करथियो किंतु एने लिमिट अच्छे तो हमें c यूज नहीं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यूज ही देबे किंतु इंटीग्रेशन करला परे ई जे लिमिट अच्छे से लिमिट का है आके पलेला परे एबे जस्ट कहली लिमिट आके पलेला परे थरे x जगह ती हायर लिमिट यूज होगा और थरे x जगह ती लोअर लिमिट यूज होगा करो 3 x to the power 8 by 8 किंतु x जगह ती थरे हायर लिमिट यूज हेले v होगा then x जगह ती थरे लोअर लिमिट यूज होला u to the power 8 by 8 आ तमे जानि छ हायर लिमिट पुट हेबा x जगह ती थरे v पुट हेला थरे तो हेला v to the power 8 by 8 then लोअर लिमिट पुट हेला
x जाती तोरे तो u to the power i by I, then higher limit to lower limit minus 1. This is answer. और this is definite integration because this integration है proper limit. माना रखिए. अब integration का use. what is the use of integration? माना रखो integration is used to calculate area under a curve. The curve में जब area रहता है, that area can be find by the using of integration. अब ये जिनिस टा तमार काइनेमेटिक ने तमें पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जहाँ भी पढ़बो इंटीग्रेशन टा एरिया बाहर करने टाइम में यूज होगा. Suppose this is a graph and if this is a curve. If we calculate this area of this curve, then only we use integration to calculate area under this curve. ये तुम आगे भी पढ़बो बाबूने फिर तुम सिंपली कह दो चाहे जब तुम एरिया कैलकुलेट करूछो ई x1 रु x2 जाए देन तुम इंटीग्रेशन लगबो इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2. आ बहुत जिनिस भी अच्छे तुम सेटा आगे पढ़बो किंतु मने रखिथिबो द इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. द कर्व एरिया का तुम इंटीग्रेशन द्वारा ही पास करी पारबो. अब केनी सब भी भारीबो तुम आगे पढ़बो निजे निजे केनडा क्वेश्चन सॉल्व करो अब प्रैक्टिस करो नहीं हवा बेले कॉल करबो डाउट क्लियर करबा के जे किंतु प्रैक्टिस करो निजे केतरे क्वेश्चन निजर माइंड रु भाबो आगो मुई पढ़ेला हिसाब से निजर माइंड रु क्वेश्चन भाबो प्रैक्टिस करो. थैंक यू.